Okay, daffodil is a flower. The color of the flower is yellow. Yellow. Yes, in the picture to the right side of the poem, a picture has been drawn of the daffodil plant, and you can see thousands of yellow flowers, and upper part of that picture you can see also the sun setting down. The sun is setting down or the sun is rising? Sun is rising, sir. Rising. Okay. I wondered. The who wondered? Wonder means? Wonder means? Anyone can you tell me? Chana. Wonder, Moved and wonder means bhatakna, roam, loiter. Have I not given to you all these three words? Wander, roam. Yes, sir. Wonder, loiter, bhatakna. Roam and loiter. Loiter, loiter. Loiter. I have given this many days ago. Yes, sir. So here it is. I In wandered. class 6. It is past indefinite. मैं भटकता रहा. Lonely means alone. There was no one with the poet. I is for the poet, and with the poet there was no one. He was alone, lonely, as a cloud. As cloud wander lonely, as the cloud wanders lonely, like that the poet also wandered lonely, like cloud. Like a cloud. As a cloud means like a cloud. The poet wandered alone. like A cloud that floats. Float means tärna. Float means stream. Float means drift. The stream, drift, float. All these three are verbs. Tärna and float means in a space. Drift means on the water. And swim on the water we swim. So clear. That floats means cloud floats on high over whales. Whales means valley. Valley means ghati. Valley means valley. Valley means ghati. The place between two mountains, the down deep place between two mountains is called valley. The deep place, gahri khai, between two mountains is called valley. The over the valley, what was floating? Cloud was floating, and the light. cloud was floating. Cloud was floating, and like the cloud, who was floating also, wandering. Poet. The poet was also wandering like the cloud, lonely in the valley. Clear? Yes. And hills. When all at once I saw a crowd. The poet saw. What did he see? What did he see? A crowd. A crowd. At once means it is a phrase. At once, ekaye. All at once means
at once the poet saw a crowd, a host of golden daffodils. Now, what did the poet see as a crowd? The golden daffodils. Sunahara, daffodils, I have talked earlier, flower. Yes, sir. Golden, golden means sunahara, sunahara, a flower, golden flowers. The who did see? The poet saw. What did he see? He saw golden daffodils. A golden flowers. And the flowers were host. If the flowers were host, then who was the guest? Poet. The poet was the guest. Poet. And flowers were host. Host, opposite of host is the guest. Host, what is the meaning of host? What is the meaning, Hindi meaning of host? सर दिखाने वाला. Yes, जो अतिथि का सत्कार करता है वो host. So who is here? Guest? Yes, the poet is the guest and the daffodils are host. Daffodils come to poet in the valley. Beside the lake, beneath the trees, where were daffodils? Beside the lake. What is lake? Valley. It is a water resource. Lake is a water resource. Resource. It is bigger than pond or tank. यह तालाब से बड़ा होता है. It is natural. Lake is natural. Pond is dug. Pond को खोदते हैं. But lake is natural. Clear? It is a water resource. Yes, sir. Beside the lake, Resource. समझिए, देखिए डिच होता है, डिच होता है छोटा गड्ढा, पूल उससे बड़ा होता है. यही सब वाटर रिसोर्सेस है. डिच, पूल, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, these all are natural resources of water. पॉन्ड नहीं, पॉन्ड चैनल और कैनाल, ये वाटर इसमें रहते हैं, बट इट इज मैन मेड. तब समझना होगा. बड़े अब Artificial. 7th में चले गए हैं. यू आर इन क्लास 7. एंड यू आर इन Heaven. heaven. Yes, as you are in class 7, you are in heaven, and when one is in heaven means he knows everything. Clear? Beside the daffodils were beside the lake, beneath the trees. Over the daffodils there were trees. Fluttering and dancing. The fluttering means moving. The butterfly flutters. The butterfly flutters and dancing in the breeze. The daffodils flowers. Then breeze. अरे ब्रीज पता है, कहीं डिंग डोंग चल रहा है, बातचीत चल रही है. ब्रीज पता है? ब्रीज सर ब्रिज. हाँ. पुल. ना, ये ब्रीज सर हवा वाला. अरे पोएम सर हवा वाला. पोएम में वैभव नहीं देख रहे हैं. पोएम में ब्रीज मैं यस सर. ब्रीज है वहाँ सर पर. डांसिंग इन द ब्रिज. हाँ. सर हवा. What is the meaning of breeze? Hava. सर हवा.
कैसा हवा? एयर, सर हल्का हवा, एयर को भी तो हवा का हल्का, एयर भी तो हवा है। अरे आई हैव गिवन ए नंबर ऑफ Blowing. words related to this. Air, breeze, wind, Storm. storm. हाँ, Storm. अब तो आएगा ही। जब झा सर लिस्ट बताना शुरू करेंगे तब तो सबको दिमाग में आ जाएगा। अब इतना देर से मैं चिल्ला रहा हूँ कि ये ब्रीज क्या है, देन यू डिड नॉट हियर। ओके, हाँ बताइए क्या क्या है। एयर, एयर से अधिक मोशन में Air, breeze, wind, storm, hurricane, tornado, cyclone. cyclone, hurricane. Typhoon, sir. Who did गेल, it? मैं नहीं कहा था गेल, GALE, लटकले तक गेले बेटा। गेल को गेले हम पढ़ते थे, डिक्शनरी में पढ़ते थे गेले, जब ट्रैक्टर पर लिखा रहता था लटकले तक गेले बेटा। गेल, गेल मीन्स तूफान। ओके, ब्रीज का ये सारा लिस्ट है। ब्रीज, एयर, ब्रीज, विंड, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टॉर्नेडो, हाँ Typhoon. हाँ, अगेन। ओके, continue fluttering and dancing in the breeze. The who were dancing, who were fluttering, and who were dancing? daffodils, The Daffodils. daffodil. Where were daffodils were fluttering and dancing? beside the lake and beneath the tree, Yes. And where was the lake and where was the trees? Where was the lake and where were the trees? In the valley, in the valley, in the valley. valley and hills, Okay. Continuous as the stars that shine. That it was shining continuously, and it has been compared, the daffodils were shining, it has been compared with what? A star. Stars. Very good. The daffodils were shining continuously like the stars. The stars shine only at night. Am I right? Yes. Yes, sir. Stars shine only at night. Am I right? Yes. yes sir, yes sir, No. No. सर Stars दिन में भी always, होता है, सूर्य की रोशनी से नहीं पता चलता, stars सूर्य के always तेज। shine. Stars all the 24 hours shine, but we do not Yes, sir. see due to the light of the sun. sun, मैं फंसा दिया ना? मैं कहा कि stars always shine all and at night, and all of you agreed thus. Yes. Okay. And a twinkle, and stars twinkle. You have read science. Can you tell me why does a star twinkle? Why? Sir, due to cloud. Due to cloud, cloud or the dust particles in a troposphere. Atmosphere. Atmosphere or troposphere, due to dust particles is एटमोस्फेयर में हम बहुत पढ़े हैं। ट्रोपोस्फेयर, Mesosphere, तब Thermosphere. ये पढ़े हैं। that due to the dust and the wind floating तैरता हुआ dust particles okay, in the first layer. What is the first layer of atmosphere? troposphere, troposphere, Yes, that I told you. That due to the dust particles floating with the support of wind ये in the troposphere, जल्दी। the star seems twinkling. In
fact, the star does not twinkle, but due to the dust particles supported by the wind, it seems twinkling. साइंस पढ़ लिए, साइंस पढ़े. You might be asked in the examination, why does a star twinkle? You might be asked. And twinkle on the Milky Yes, sir. Way. What is Milky Way? It is a galaxy. The Galaxy. galaxy. It is a Yes. galaxy. The smallest. What is the smallest? Which one is the smallest unit of the solar system? Is the smallest unit of solar system? Moon. Moon, sir. Very good, very good. Satellite, उसको हम कहेंगे satellite. Our Yes. solar system, when we are talking, then we can say that the smallest unit of the solar system is a natural satellite. Natural satellite. Of Earth. Then Natural satellite of Earth. Yes, sir. natural satellite, and bigger than natural satellite, planet. Space. Planets. Planet. Bigger than the planet, Sun. Star. star, Stars. and the group of stars, Constellation. constellation. So, Constellation. galaxy, group of star constellation, and group of constellation is a galaxy. Clear है? Yes, sir. देख लीजिए झा सर कहाँ कहाँ पहुंचा रहे हैं. अभी आकाश में लगे सबको 55 रुपया भाड़ा लगेगा आप घूमने का. सब जगह घुमा दिए हैं. तो डैफोडिल से स्टार में चले गए. हाँ, सबको एक एक अमरूद चार्ज में लगेगा. ये इंग्लिश के साथ ये एडवांस इन प्लेस ऑफ ये जो फ्रेजेज आया है सब लिखे हैं. इंग्लिश के साथ साथ हम लोग वाटर रिसोर्सेज पढ़े हैं, स्टार्स पढ़ रहे हैं. तो ये सब आउटर पार्ट है, ये सब का ध्यान देना है. अब रहने दीजिए. Yes, sir. हाँ, अब रहने दीजिए. Yes, sir. Take that. हाँ, Never. हाँ. Okay, sir. किसको कुछ पूछना भी है तो पूछ लो फटाफट. तुमसे ज्यादा हेलो, किसी को पूछना है कुछ भी है? वैभव No, no, sir. नहीं पूछना है. नहीं, मुझे पूछना है आपसे. Yes, sir. बोलिए. डिस्पैरिटी का क्या वर्ड मीनिंग देखे? क्या चीज का? डिस्पैरिटी मैं दिया था अपने कमेंट में, तो डिस्पैरिटी का क्या मीनिंग देखे? धमकी नहीं दो हिमांशु को कभी की हिमांशु चालू है. नहीं देखे. अरे एकदम बोलिए ना, कोई गड़बड़ी नहीं होगी. मैं वहाँ थोड़ी हूँ जो मैं अपना चेहरा भी बिगाड़ लूंगा. डिस्पैरिटी का क्या देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं, डिस्पैरिटी नो. मैं 3 वर्ड्स दिया था, प्रोजेक्ट, डिस्पैरिटी एंड डाउन प्रोजेक्ट. दिया था कि नहीं? Yes, sir. तो किस लिए दिया था? मैं इतना आंख फोड़ फोड़ करके जो मैं वो लिखा था उस पर, तो यूनिट लिखा था. ओके, बाय. मैं दूसरे दिन भी पूछ लूंगा.
सर कौन सा मीनिंग बोले हैं? अरे सर कौन सा मीनिंग? disparity project are downtrodden. ओके, बाद में बात करेंगे। सर असमानता, डिस्पैरिटी मींस असमानता। हाँ, तो अभी न देखे हैं, इतना बात लंबा चौड़ा हो करके देखे हैं। वो दिया था आज से 3 दिन पहले, मैं 3 दिन पहले दिया था, लिखा था कमेंट में। सर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। हाँ, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको लिखा था, तो उसको प्रशंसा में लिखा, तो मैं विश्लेषण करके लिखा, तो वही वर्ड पूछा था। मैं जो कमेंट में लिखा था उसी में ये सारे वर्ड्स यूज हैं। चार्ज खत्म। ओके सर 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 हाँ, पूछना है, पूछ लो जल्दी। सर सर हमको भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे अपना वो अपना पिक्चर अभी मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। आप उस पर नहीं तो अपना नाम लिख दीजिए, तो मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएगा, तो अपने आप से रहेगा, मुझे पता रहेगा ये है। सर आप जोड़ दीजिएगा। तो मैं कैसे जोड़ूंगा? मुझे जोड़ने थोड़ी आता, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे जोड़ने नहीं आता है। उसको कैसे अभी तोर क्लास में स्टार्ट हुआ आज जो जितना अभी क्लास में आए गुड्डू अथी होंगे। जी। सर ओके, बाय। चार्ज खत्म हो गई।